what is MnO2 MnO2 plus 4HCl 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 is giving you how much? MnCl2 MnCl2 plus H2H 2H2O plus Cl2. Cl2. Okay, so this is the equation, and what data is given to you? Manganese. What is the molar mass of manganese? Atomic mass of manganese is how much? Atomic mass of Mn is how much? 54.94. 54.94. Okay, 54.94 लिखा हुआ है तो you can write it 54. अभी चल रहे हैं 54.94, right? So molecular mass of MnO2 molecular mass is equal to 54.94 plus 32. It is how much? 86.94 gram. 86.94 gram. Right? Now 86.94 gram is equal to 1 mole. So 1 mole is equal to 86.94 gram. So 0.02 moles is equal to how much? 86.94 into 0.02 gram. So it will be 86.94 into 0.02. That is 1.74 gram. What is your answer? 1.74. 1.74 gram. ठीक है, 0.02 moles of manganese oxide becomes 1.74 gram. This is your answer. What next it is asking for? Moles of salt formed.
its mass is 86.94. है ना? Its mass is 86. .94 gram. And it is how much? MnCl2 कितना हो जाएगा? 54.94 plus 35.5 becomes 71. 71. तो कितना हो गया? नहीं, सॉरी, 0.94. $125.94 gram. 86.94 gram is giving you 124.94 gram. Okay. So we can write here 86.94 gram MnO2 is giving you MnCl2 that is 125.94, right, gram. So basically it is how much? 0.02 mole. It means 1.74. So 1.74 gram will give you how much? MnCl2. So 125.94 into 1.74 divided by 86.94. It is 2.52 gram. It is 2.52 gram. Right? Right. So 125.94 gram MnCl2 is equal to 1 mole. So 2.52 gram will be how many moles? 2.52 divided by 125.94. What is your answer? 0.02. Third part or fourth? अबे second part है. 0.0.
this is 0.02 moles. कैसे? That is 2.52 divided by 125.94. सेम ये जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.0200 moles, right? It is moles. So this much is moles of salt we are obtaining, right? Get this? So what we have else? Moles of salt. अब mass of salt is formed. Mass of salt is formed is 2.52 gram. Mass of salt. What is given? Mass of salt is formed. That is 2.52 gram. What is your answer? 2.5. This was this is answer 1. This is answer 2. This is answer 3. What it is asking for next? Moles of chlorine gas formed. Do you understand this much? Should I rub? Mass of chlorine is equal to 4 into 35.5. It becomes 1.42 gram, and chlorine gas is 71 gram. तो +4 अगर इसमें हम कर दें तो कितना हो जाएगा? 146 gram. So 86.94 gram combines with
146 gram of hydrogen chloride. So this is how much? 1.74 gram. Huh? हेलो 1.74 ग्राम में कितना हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करेगा? वन 146 into 1.74 divided by 86.94, right? It means 2.92. इसमें में MnO2 जो है वो कितना है? 1.74, और इसमें जो क्लोरीन है वो कितना है? 2.92 ग्राम. अब 2.92 ग्राम में अगर तुम रेशो अगर ये निकालो, ये तो पूरा हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया. 146 gram of hydrogen chloride is giving you chlorine is 71 gram, right? तो 146 ग्राम कितना क्लोरीन देगा? नहीं उल्टा लिखते हैं. 146 ग्राम. 146 gram hydrogen chloride is giving giving chlorine 71 gram. तो ये कितना हो जाएगा? It becomes 146 ग्राम ना. So 2.92 into 71 divided by 146, it becomes 1.42. ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.42 ग्राम ऑफ क्लोरीन. 1.42 ग्राम ऑफ क्लोरीन, राइट? अब 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज हैविंग 1 मोल. तो 1.42 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल हैव हाउ मच? That is 1.42 divided by 71. कितना आता है? Zero 0.199 moles. 0.02 moles. You can say it is coming 0.02
019 moles, which we called 0.02 moles. Is it okay? You are getting what I did? Yeah, you see here, its mass is 146 gram. 4 plus 142. Its mass is 146 gram. और the chlorine mass is 71 gram. So 146 gram of chlorine is combining with 146 gram of hydrogen chloride is giving you 71 gram of chlorine. Basically, तो अब हमने ये निकाला पहले कि मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब 86.94 gram of manganese dioxide is combining with 146 gram of hydrogen chloride. So 1.74 gram, which we get earlier, 1.74 gram of manganese dye will combine with how much hydrogen chloride? That is 2.92 gram. Right? 1.74 ही तो निकाला था मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैंने रब कर दिया है. हाँ, तो उससे हमने निकाल लिया कि इतनी क्लोरीन कंबाइन हो रही है. अब 146 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड, कंबाइंस एंड गिव्स 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन. सो 2.92 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विल कंबाइन एंड गिव हाउ मच? सो दैट इज 2.92 71 gram chlorine combines with is equal. तो ये हो जाएगा तुम्हारा. मैंने इसको किसको क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट? सो ये जब मैंने किया यहां पे तो ये हो गया 2.92 इंटू 71 ग्राम अपॉन 146, राइट? इसको जब आपने सॉल्व किया 2.92 इंटू 71 डिवाइडेड बाय 146, इट इज 1.42 ग्राम आ गया. इसकी वैल्यू आई दिस 1.42 ग्राम. मतलब क्लोरीन जो है यहाँ पे ये 142 ग्राम है, इज इक्वल टू 1.42 ग्राम, राइट? अब हमें मालूम है कि 71 ग्राम क्लोरीन का जो इज इक्वल टू 1 मोल. तो 1.42 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल बी हाउ मच? 1.42 into 1 upon 71, and you get 0.0019. 0.019, that is 0.02 moles. इतने मोल्स हो गए. समझ गए बात? मतलब we are combining, here is combining how much? 1.75 gram. It is 1.74 मोल, राइट? और ये जो है ये है 2.92 ग्राम. 2.92 ग्राम. इसका हम लोगों ने कुछ निकाला था, इसको भूल जाओ. क्लोरीन जो हो गई, क्लोरीन हो गई 1.42 ग्राम. 1.42 ग्राम, राइट? तो ये हमने निकाला है क्योंकि इन दोनों से हमने निकाला है, राइट, कि ये 1.42 ग्राम होगी. तो 1.4 इसका जो होता है 71 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. तो 1.42 ग्राम विल बी दिस मच. व्हाट नेक्स्ट यू हैव?
Oof. Mass of chlorine gas formed. Mass of chlorine gas formed is how much? 1.42 gram. Is What is written? 1.42 grams. So this is 1.142 gram. So this was आंसर नंबर वो 3 था, ये 4 हो गया, ये आंसर 5 हो गया. नाउ नेक्स्ट. Volume of chlorine gas formed at STP. $71 gram is having volume 22.4 liters. तो 1.42 gram will have volume कितना हो जाएगा? 22.4 into 1.42 divided by 71. It is 0.448 लीटर. कितना आता है? 0.448 लीटर्स. कितना आ रहा है? 0.448 d meter square at STP. क्या? 0.448 d meter square at STP. डेसीमीटर स्क्वायर. See. हम्म. What else? Moles of acid required. Moles of acid required. So question is Question is 1000 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. 1 decimeter is equal to 1 meter is equal to 10 decimeter, and 1 meter is equal to 100 centimeter. So 10 decimeter is equal to 100 centimeter. So 1 decimeter is equal to 10 centimeter.
तो 1 decimeter cube is equal to 1000 centimeter cube, and 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. So we can say it is equal to 1 decimeter cube is equal to 1 liter. Do you get this? So that's why you can write here 0.448 decimeter cube. I hope you understand this conversion, right? Oh my god. Now what happens? Mass of acid required. Mass of acid required 2.92 ग्राम. कितना है तुम्हारी किताब में? 2.9. तो मैंने निकाल तो दिया. कहाँ से निकाला? ये निकाला था ना. 86.94 gram is combining with 146 gram of hydrochloric acid. So 1.74 gram is combining with this is answer number 5. 6. Abbe this and this is 6. Sir, 6. So where is 5? This is 5. ऊपर. अच्छा 5 4 5. This is 6. This is 7. Okay, आगे. None. और नहीं कुछ नहीं. Did you understand what I did?